I had to give the India perspective of how the Bitcoin has taken place and how the revolution has taken place. So I was like, coming to home, India has a love-hate relationship with Bitcoin. The public loves it, but the government hates it. So we are confused. I think that was very funny. It is funny. And coming to a point, when you talked about, India and its Bitcoin scenario, मुझे अभी भी लगता है कि like if we have youth like you and me, we have teens following the trends, jumping on the bandwagon of something that's new, something that's reaching new heights every day. So what I feel about Bitcoin like the scene of Bitcoin in India is like the youth is confused actually. Like they know or they don't know about Bitcoin. There are people who don't know anything about it but still own some Bitcoin, but there are people who know a lot about it. Or I'd say, like, take my example. I know what Bitcoin is, I know how it works, I know the public ledger, all the blockchain system, but still somewhere I'm confused why I am not getting a Bitcoin and I still don't have a confidence. वो है ना एक डर. I think every disruptive technology, Yeah. first edition of every disruptive technology has a learning curve. Like another tweet I saw recently was that NFTs will become mainstream once they go away from being called as that crypto thing. Yeah. Twitter was avoided until it was not Internet 2.0. Yeah. Internet came into mainstream when it was not just this fab. People didn't understand it, so they rejected it. Because they want to feel safe. They want to feel like they know. Yeah. They know what's happening. Because that learning curve is scary, man. Pretty scary. You're like, okay. Yeah. So you're saying that my money is digital. What? तू कह रहा है मेरे पैसे मेरे पेन ड्राइव में What? बैंक कुछ भी नहीं कर रहा. What? Elon tweet करेगा मेरे पैसे बढ़ेंगे. What? नहीं, the way you talked about learning curve, मैं खुद से एक relate कर पा रहा हूँ. Like you gave the example of internet. तो I vividly remember जब Snapchat आया था and I was like 16-15, तो मैंने वो फ़ोन पे डाउनलोड किया और मैंने वो ऐप खोली थी, एकदम कैमरा खुला, जो मुझे थोड़ा बहुत याद है, एकदम याद नहीं सच्ची बोलूँ तो, बट कैमरा खोला, मेरे को समझ ही नहीं अब क्या करूँ. फ़ोटो खींचूँ और मैं स्कूल आता हूँ तो बच्चे ऐसे बात कर रहे हैं, भाई स्कोर देख स्नैपचैट का, ये देख वो देख, और मैं इतना मतलब कोशिश करी मैंने, हाँ, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मैं क्यों नहीं हूँ स्नैपचैट के बैंड वैगन पे. तो मैंने सोचा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ. फिर मेरे को समझ नहीं आया स्नैपचैट की, मैंने डिलीट कर दिया, एक अकाउंट बनाया, then signed out. So what I feel is that Bitcoin is, as of now being disregarded by us at the moment, but it will come back again very strong and will hit us. Obviously, because will hit us real bad, like not bad but good, but it's like the ball is rolling. So then it will take a jump. It will come down. Yeah. Whether you catch it or not. वो आ रही है. Either it hits you right on the face or either you catch it. हाँ, it's like that. The ball is going to drop. तो मतलब the learning curve is the most challenging part of Bitcoin, because if entire crypto scene, not only Bitcoin. बड़ा interesting था that मैं cryptocurrency के बारे में around 6-7 months से पढ़ रहा हूँ, and मैंने नवाल रविकांत का सारा material सुना है. What he speaks, he's a very big custodian for cryptocurrency, and मैंने Vitalik Buterin, the founder of Ethereum, उसने बड़े सारे talks दिए हैं, उसके ऊपर पढ़ा है. I've done a lot of research. Right. But the interesting part was I was giving that presentation in my class, and my teacher is like mid-30s, I think. And when I spoke about Bitcoin, and then she was giving me feedback about how the presentation stuff was, so she was giving her opinion. So obviously she's teaching me finance, so she's well read and all that. She knows there's potential. So she was like, there's potential and this and that and this and that, and she was like,
बट रिस्क्स भी हैं, स्कैम्स भी हुए हैं, लोगों को फाइनेंशियल लॉसेस भी हुए हैं. सो आई डोंट नो व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स. लेट्स सी, विल see about it. I don't know how the technology will go. So obviously I'm मतलब हम दोनों 19 है, so we have that nature. I understand, मतलब I recognize that enthusiastic nature we have. हाँ right, जो हमारे में होता है कि हाँ पैसा डबल. So she has that interesting approach के she's like safe and you know के we'll safe and see, solid. Yeah. we'll see. And then I see that in my dad. He's like, okay, but अभी मत कर. He's like, नहीं. कल को बंद हो गया पैसे कौन हाँ. देगा? ऑफिस का है इसका. Because they, I'm not saying मेरे को बहुत पता है उनको नहीं पता है, but like a disruptive technology, there was this documentary, so he was like कि every disruptive technology has a very violent opposition that doesn't want it to grow. So when cars came along for the first time, वो गाड़ी की प्रोडक्शन में ही इतना ऑपोजिशन था कि दिस इज गोइंग टू किल सो मेनी पीपल. सो जब पहली गाड़ी चलती थी, देयर वाज लाइक कि एक गाड़ी चलती थी, सो द पैसेंजर यूज्ड टू सिट, देन उसके साथ एक ड्राइवर होता था, ड्राइवर के साथ एक इंजीनियर बैठता था कि अगर गाड़ी ब्रेक डाउन कर गई तो क्या होगा. एंड आगे एक बंदा रेड फ्लैग लेके या वाइट फ्लैग लेके चलता था फुल टाइम उस गाड़ी के आगे कि अ कार इज कमिंग, बी सेफ. सो इट वाज लाइक द गवर्नमेंट्स एंड बैंक्स आर दैट मैन विद द फ्लैग. गाड़ी आ रही है. Totally understandable. Because they're like, no. What? System change? Change तो कहते हैं ना, change is the spice of life. ये change में मजा आता है, but you know there are a lot of people who are very hard to change. Humans का तो nature होता है कि they tend to resist change. Change inertia. What do they call that? हाँ right, something like change that. But humans like they are very resistant to have a change with them. Like they don't want to change usually. तो अब जैसे हम बात कर रहे हैं, अब एक ही जैसे बिटकॉइन ही नहीं है, और भी कॉइन्स है, जैसे ईथर है, बिटकॉइन है, इलॉन भाई का डॉजी कॉइन है, डॉगी कॉइन, डॉजी कॉइन, डूश कॉइन, डूश जर्मन है ना डॉग का, डूश आई थिंक. डूश इज इट सच्ची डूश है? डूश कॉइन. तो आज पता लगा दोस्तों, सिर्फ डूश कॉइन कहते हैं, डॉगी कॉइन या डॉजी कॉइन कुछ नहीं होता, डोज कॉइन कुछ नहीं होता, डूश कॉइन. एक तो श्योर है ना? हाँ आई थिंक डिसलाइक आ जाएंगे. कॉर्गी वाला मीम, वो जो कुत्ता वही ना बड़ा होता है, फिर एक ऐसा रो रहा होता है, बॉन्क. वो इंडियंस इन द लास्ट मैच ऑफ द सीरीज, इंडियंस इन द फर्स्ट मैच ऑफ द सीरीज. हाँ बिल्कुल. तो इलॉन मस्क जैसे अब स्पेक्यूलेट करता है, जैसे मैं बोलूँगा स्पेक्यूलेट नहीं, बट लेट्स से हाइप. इलॉन मस्क का खुद का, द कंपनी हैज सूड इलॉन मस्क, ही हैज अ केस गोइंग ऑन. व्हाट? बिकॉज वो कुछ भी ट्वीट करता है, टेस्ला के स्टॉक्स ऊपर नीचे हो जाते हैं. हाँ. तो द स्टेक होल्डर्स आर लाइक क्या कर रहा है? तो उसका इंटरनली उस पर केस चल रहा है उसके ट्वीट्स के रिगार्डिंग, कि तू कुछ भी ट्वीट करता है हमारे स्टॉक्स ऊपर नीचे हो जाते हैं. बट वो ट्वीट करे, वो तो उसकी एक पर्सनल एक्सप्रेशन है ना वो. हाँ बट उस पे मना इन्फ्लुएंस भी तो है. अब डोनाल्ड ट्रम्प को हटा दिया, क्यों हटाया? उसकी पर्सनल एक्सप्रेशन है, बट उसके इन्फ्लुएंस है ना. एक बुरी मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है. डोनाल्ड ट्रम्प तो वैसा सा था, ठीक है, बट यू नो इफ यू टॉक अबाउट योर मनी, दैट द फ्यूचर ऑफ मनी दैट इज डिजिटल, क्रिप्टो, I'd say not Bitcoin specifically, क्रिप्टो. 100 रुपये का आज है, ईलॉन जैसा बंदा आता है, वो कुछ कह देता है उसके बारे में, वो 110 का हो गया अगले दिन, 10 रुपये, 10% गेन. 100 और 110 सुनने में कम लग रहा है, बट 100 और 110 अगर आप लाखों में ले जाओ, ऑब्वियसली तो बहुत बड़ा गेन इन बहुत बड़ा जंप. फकिंग क्रेजी यार, लोग पागल है यार. इलॉन मस्क ने जब ट्वीट किया था यूज सिग्नल, हाँ अरे तेरे को पता है ये बात?
there was this stock in India. हाँ Signal something. हाँ उनका stock rise हो गया. People started buying उनके stocks. हाँ and they were nowhere कोई near to- relation नहीं हाँ, है nowhere signal near. से. हाँ, So Indians. They were like क्या? कितनी आबादी है हमारी 150 crore I think. 1.7, 1.8 something. बिलियन I don't know the conversion. हाँ बिलियन ही होगी मेरे ख्याल. There's 1.2 billion of us. कुछ भी कर रहे हो भाई. मतलब so but coming back to the point that obviously most people who are buying Bitcoin or they trust in Bitcoin or they're positive about its future have monetary interests. हाँ exactly. समझ रहा है? They don't give. I mean, I care about what's happening in this space. I deeply care about the idea behind it. But at the end of the day, अभी तक मेरे को technical know-how नहीं है. मैं developer नहीं हूँ, मैं engineer नहीं हूँ. So what can I do? Use that movement, understand what it's about, buy some of it, and take my money away and go home. But हाँ But I guess जो philosophy उसके behind है, जो उसकी beauty है, they're missing that people don't want banks, people don't want institutions. लोगों को media नहीं चाहिए, they're running to Twitter. लोगों को banks नहीं चाहिए, they're going to crypto. लोगों को बीच में companies नहीं चाहिए, they're going to Uber, they're going to Airbnbs. Direct. Yeah, peer to peer. They don't want someone that middleman some mediator. That middleman better be fucking scared क्योंकि लोगों को नहीं है वो and unconsciously नहीं है. Crypto wouldn't have risen this much